What are you doing this? ॐ नमो हरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वचाय સાઉન્ડ આનો બંધ કરી દેવું છે આપણે ફોન કોઈનો ન આવે બંધ કરી દેવું છે Are we all okay? Should we start? We are all past 7. Jai Jinendra Bipin Bhai. Jai Jinendra, am I audible now? Yes, Bipin Bhai. Am I audible to you? Yeah, sure. So, welcome Bipin Bhai to this 6th lecture of our Discovering Jainism. આપનું ઇન્ટ્રોડક્શનની કોઈને હવે જરૂરત નથી. આપે 6 અઠવાડિયાથી બધા ઉપર તમારી જ્ઞાનની વર્ષા કરેલી છે અને આજે તમે ઓર અમને એનલાઇટન કરશો એનું અમને ખાતરી છે. બધાને નવાઈ લાગશે, હું ગુજરાતીમાં બોલી રહ્યો છું. માયસેલ્ફ ધૈરવ શાહ, because મને કહેવામાં આવ્યું છે today we have to add a bit of Gujarati flavor also. So Bipin bhai, today's topic of physical and mental well-being. જોવામાં બહુ એકદમ સાંભળવામાં બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટોપિક લાગે છે આપણને અને આજના ટાઈમ ઉપર તો એની બહુ વધુ મહત્વ એને આપવાની આપણે જરૂરત છે. પણ આપણે આજે ડિસ્કસ કરી રહ્યા છે જે ફિઝિકલ અને મેન્ટલ વેલબિંગ ફ્રોમ ધ જૈન પર્સપેક્ટિવ. ના ધીસ ઇઝ વેર ઇટ ગેટ્સ ઇન્ટરેસ્ટિંગ કે આપણે બેઝિકલી વેલબિંગમાં પણ રિલિજનને નાખી રહ્યા છે. તો એના ઉપર પાછળ આપણું શું, એટલે બેઝિકલી વોટ આર વી ટ્રાઇંગ ટુ અચીવ, એ આપણે આજે ડિસ્કશનમાં લઈશું કે આપણે રિલિજન અને મોડર્ન ડે વેલબિંગ કે સાયન્સ આપણે કહીએ કેટલા ક્લોઝલી રિલેટેડ છે. કારણ કે મારું માનવું એમ છે કે ટ્રુ રિલિજન ઇઝ નેવર ડિફરન્ટ ફ્રોમ ટ્રુ સાયન્સ એન્ડ વાઇસ વર્સા. તો લેટ્સ ટ્રાય ટુડે કે આપણે કઈ રીતે એને એનો સમાવેશ કરી શકીએ અને બંનેને કોઓર્ડિનેશનમાં સમજી શકીએ ફિઝિકલ અને મેન્ટલ વેલબિંગ. બિપિનભાઈ, આઈ વુડ લાઈક ટુ સ્ટાર્ટ. સૌથી પહેલા આપણા જૈનિઝમમાં મૂળ તત્વ આપણું જે કહેવામાં આવ્યું છે એ છે આત્મતત્વ, જીવ તત્વ. ના આપણે જ્યારે એ જીવ તત્વની બારામાં ચર્ચા કરીએ તો બેઝિક તો ફાઉન્ડેશન એ છે કે જીવ અને બોડી, આપણું શરીર બે અલગ વસ્તુ છે. આ આપણું ફાઉન્ડેશન છે જૈનિઝમનું. અને શાસ્ત્રમાં એને અભેદ જ્ઞાન, એની સમજવાની શક્તિને અભેદ જ્ઞાન કરીને એ ઉલ્લેખ થયેલો છે એના ઉપર. તો હવે આ અભેદ જ્ઞાન શું કામ હોવું જોઈએ, શું છે, અને એનાથી આપણે કઈ રીતે આપણા શરીરને કે આપણા
અસ્તિત્વને કઈ રીતે વધારે સમજી શકીએ છીએ એના ઉપર આપ જરા અભેદ જ્ઞાન ઉપર જરા આપણે ચર્ચા શરૂ કરીએ. ओके, सबको सादर जय जिनेन्द्र. सौने सादर जय जिनेन्द्र. आज गुजराती और हिंदी में ज्यादा बोलेंगे जैसे आपने कहा है. तो देखिए, एक शब्द जो है अभेद ज्ञान, जहां भेद नहीं है, जहां डिवीजन नहीं है, जहां डिसइंटीग्रेशन नहीं, और अभेद का मतलब होता है आत्मा का स्वरूप. और जब भी हम ये कहते हैं कि आत्मा और शरीर अलग है तो उसको हम भेद ज्ञान कहते हैं. और भेद ज्ञान का मतलब है कि हम ये समझे कि मेरी आत्मा से मेरा शरीर का कोई लेना देना नहीं है, मैं शुद्ध परमात्मा चैतन्य स्वरूप परमात्मा हूं. यहाँ में एक बात को खास याद रखनी चाहिए कि जो काफी हमारी परंपरा है वो तो यही कहते हैं कि जब तक भेद विज्ञान नहीं होता है सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती. या आज हम बात करने जा रहे हैं क्रियाओं की, या तो रिचुअल्स की. संस्कार के लिए, संयम के लिए, अहिंसा के लिए क्रियाएं बहुत जरूरी है. लेकिन रिचुअल्स के बारे में जो भी मिसकॉन्सेप्ट या तो जो भी आज बातें चल रही है काफी यंगस्टर्स में, उसके बारे में मैं 2-3 चीज आपको कहना चाहता हूँ. सबसे पहले, एज आई टोल्ड यू, टू डेवलप द वर्च्यूज, to develop the restraint and to develop the non-violence, rituals are very important. लेकिन आज के बच्चे हमें ये कह रहे हैं कि भाई लॉजिक, because you know we are born with logic, everything we want to be, you know, लॉजिक होना चाहिए, हर चीज के पीछे लॉजिक. तो यहाँ हमें 1-2 चीज याद रखनी चाहिए, और मैं सब बच्चे को पहले चैप्टर में यही पढ़ाता हूँ, लॉजिक वर्सेस फेथ. देखिए, लॉजिक का मतलब होता है वी ट्राई टू फाइंड आउट the cause and effect relationship for everything. लेकिन मैं एक सीधा प्रश्न पूछता हूँ, सब लोगों को यही प्रश्न पूछता हूँ, व्हाट इज द लॉजिक ऑफ आवर एग्जिस्टेंस? हमारा जो एग्जिस्टेंस है उसका लॉजिक क्या है? और एक प्रश्न आगे पूछता हूँ कि भाई पूरे विश्व क्या एग्जिस्टेंस का लॉजिक क्या है? कोई लॉजिक नहीं लगता है, बस है, नेचर है. दैट मीन्स इट डायरेक्टली प्रूव्स दैट एवरीथिंग कैन नॉट बी लॉजिकल इन दिस यूनिवर्स. और एक चीज पूछता हूँ बाद में बच्चों को, एक और चीज पूछता हूँ, हाइड्रोजन हैज गॉट 1 वैलेंसी, ऑक्सीजन हैज गॉट 2 वैलेंसी, कार्बन हैज गॉट 4 वैलेंसी, व्हाट इज द लॉजिक ऑफ दिस? तो बच्चे कहेंगे तो नेचर है. तो हम यही कहते हैं कि नेचर एंड लॉजिक. आप उसने नेचर का जवाब दे दिया, हमने उसको रिलीजियस का या तो स्पिरिचुअलिटी से देखा और वो जवाब दे दिया. तो ये पहले सब बच्चे को राइट फ्रॉम चाइल्डहुड ये पढ़ाना चाहिए कि हर चीज में लॉजिक नहीं होता है. दूसरी चीज जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और खास करके सबको कहता हूँ, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है उसको ये सब समझाने की बहुत जरूरत पड़ती है कि हमारा जो विज्ञान है उसके 3 पार्ट है. एक हम कहते हैं इंपिरिकल साइंस. इंपिरिकल साइंस मीन्स दैट विच इज प्रूव्ड इन आवर लेबोरेटरीज और आवर एक्सपेरिमेंटल बेस. दूसरा होता है एक्सपीरियंशियल साइंस, जो हम एक्सपीरियंस से प्राप्त करते हैं, उसको हम लेबोरेटरी में पुरवार करने के लिए नहीं जाते हैं. वी डोंट गो दैट टू फाइंड आउट. काफी वर्षों से हमारी मानव जाति का एक एक्सपीरियंस रहा है, उसको हम एक्सपीरियंशियल साइंस कहते हैं. और एक तीसरा साइंस है जिसको हम एक्स्ट्रा सेंसरी साइंस कहते हैं. आज भी हम एक्स्ट्रा सेंसरी को मानते हैं. एक्स्ट्रा सेंसरी क्या है? अ डायरेक्ट नॉलेज बाय द सोल विदाउट द यूज ऑफ सेंसेशन. तो हमें सिर्फ एम्पिरिकल साइंस को नहीं मानना है. लॉजिक सिर्फ एम्पिरिकल साइंस को मानती है, लेकिन देयर आर थिंग्स व्हिच आर मच मच बियॉन्ड दैट. क्रिया के बारे में 2-3 चीज मैं बहुत क्लैरिटी से कहना चाहता हूँ कि बिकॉज यू नो पीपल क्रिटिसाइज, ये रिचुअल्स को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं. देखिए, रिचुअल्स आर वेरी गुड, तन की शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए, आत्म शुद्धि के लिए. अगर कोई व्यक्ति उसको अच्छी तरह नहीं करते हैं तो दैट डजंट मीन दैट रिचुअल्स आर नॉट राइट और द रिचुअल्स आर नॉट प्रॉपर. हमें ये चीज को बराबर समझना है. और एक बात ये भी है कि अगर रिचुअल्स में नॉलेज बढ़ जाए तो हमारी रिचुअल्स की जो गेन है, प्रॉफिट है, उसमें से हम जो पा रहे हैं इट इंक्रीजेस 10 टाइम्स और 100 टाइम्स. रिचुअल्स का एक बहुत महत्व ये है कि इट कैन सेटिस्फाई ऑल योर नीड्स ऑफ, जैसे सिंपल भाषा में कहते हैं, देखिए हमारा भूतकाल खराब है तो उसको कैसे अच्छा कर सकते हैं? आपको प्रतिक्रमण दिया गया है. आपका वर्तमान काल ठीक नहीं, आप कैसे अच्छा कर सकते हैं? आपको सामायिक दी गई है. आपके फ्यूचर को आपको सुधारना है,
तो आप कैसे कर सकते हैं? तो पचकाट से आप कर सकते हैं। यानी कि जैन फिलोसॉफी सच अ ब्यूटीफुल फिलोसॉफी वेर यू हैव अ सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। और एक चीज जोड़ना चाहता हूँ, हर एक क्रिया के पीछे सबसे बड़ा जो महत्व का अंग है, व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर रिचुअल इज भाव। देखिए, एक ही क्रिया है, एक क्रिया में अगर हमने भाव से नहीं की या तो दुर्भाव से किए तो वो पाप का बंध हो जाता है, हमने अच्छे भाव से की तो पुण्य का बंध होता है। और अगर बहुत सरल भाव से की, बहुत बहुत एकदम सरल भाव से हमने की, तो निर्जरा का कारण बन जाता है। एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, आपने दान दिया, तो दान में अगर मेरा अहंकार है तो पाप का कारण बन जाता है। अगर दान मैंने दिया, कोई अच्छे भाव से दिया, वो पुण्य का कारण बनता है। लेकिन अगर मेरा दान एकदम सरल है, जहां मुझे कोई भी अपेक्षा नहीं है, तो वो वयावच हो जाती है, यानी कि निर्जरा का कारण होता है। तो जो भी हम क्रियाएं करते हैं, उस सब के अंदर एक चीज ख्याल रखना, हमारी जो भी क्रियाएं है वो अहिंसा के लिए है, संयम के लिए है, आत्म शुद्धि के लिए है। और हमारा जो आज का टॉपिक है फिजिकल वेलबींग और मेंटल वेलबींग इज अ बाई प्रोडक्ट। तो हमें ये भी ख्याल रखना है कि जब तक मेन प्रोडक्ट नहीं है तो बाई प्रोडक्ट नहीं आएगा। सो मेनी टाइम्स पीपल ट्राई टू क्लेम अ लॉट कि हमारा धर्म बहुत फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए अच्छे बहुत बढ़िया बातें कही गई है। ठीक है, वो बात बड़ी बढ़िया भी है। एक बार एक व्यक्ति मुझे कह रहा था कि हमारे भगवान बड़े साइंटिस्ट थे, तो मैंने कहा बेटा, सीईओ को मैनेजर मत बनाओ, भगवान इज मच मच बियॉन्ड दैट। हम साइंस का टाइटल देखे तो उसको डिग्रेड कर रहे हैं। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ अवर जैन रिचुअल्स एक्चुअली। તો એક્ઝેક્ટલી બિપિનભાઈ, એટલે આમાં કેવું છે કે મોડર્ન સાયન્સમાં સાયન્સ વિજ્ઞાન એવું માને છે કે છેલ્લે બધું થાકી જાય, લેબોરેટરીમાંથી થાકી જાય એટલે પછી એમને કંઈક આત્મા જેવું છે કે હાયર પાવર જે છે એવું એમને રિયલાઇઝ થાય છે. પણ મારું એવું માનવું છે, આઈ મીન બિંગ ઇન ધ ફિલ્ડ ઓફ સાયન્સ એઝ વેલ, કે આપણું ધર્મ તો એવું છે કે ત્યાંથી તો શરૂઆત કરે છે કે બેઝિકલી આપણું સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ જ જે છે કે આત્મા છે, અને આત્માથી જ જેમ તમે કીધું આ બધું બાય પ્રોડક્ટ છે. એટલે આ બેઝિક ફિલોસોફી મારા હિસાબે સમજવી બહુ જરૂરી છે આપણે, કે વેર ધ વર્લ્ડ ઇઝ એન્ડિંગ વી આર સ્ટાર્ટિંગ. સો એટલે હવે આપણે આમાં આ એક વાત નાની એવી એડ કરી દઉં કે સી કોઈ પણ ક્રિયા આપણા ધર્મની અંદર આપી છે ને, એના બે ભાગ તો હંમેશા કરવા, પોતાની પોતાના માટે, બરાબર છે, અને તીર્થંકર પદ પામ્યા પછી એને પર માટે, સર્વ જીવ કરવું શાસન રસી, આત્મશુદ્ધિ અને પર આત્મશુદ્ધિ માટે આપણે બધા જ રિચ્યુઅલ્સ કરવાના છે. અને વોટ યુ સેડ ઇઝ વેરી રાઈટ કે આજની પેઢીને છે ને, ટુડેઝ જનરેશન, વી ડોન્ટ સ્ટાર્ટ વિથ સોલ, then they get confused. So yes, જેને અનાર્યની ભાષા, અનાર્યને અનાર્યની ભાષાથી જ સમજાવી શકાય એવું આપણા ધર્મમાં બી કહ્યું છે. તો યસ, we may start with environment, physical well-being or mental well-being and then take them to the soul. એટલે આપણે પાયામાં આપણે સોલ થી સ્ટાર્ટ કરવી એ આપણું મેઇન મહત્વનું છે, આપણો એ આસ્તિક ભાવ કે સોલ થી આપણે બધું સ્ટાર્ટ કરીએ. તો હવે બિપિનભાઈ, સેકન્ડ ક્વેશ્ચન આપણે એમ આવે કે સમજો સોલ જે છે દેખાતો નથી, એનો રસ આપણે સૂંઘાતો નથી, જોઈ નથી શકતા, ક્યારે આપણે લેબોરેટરીમાં એને પ્રૂવ નહીં કરી શકીએ, અને જો સોલ જ જો બધું કરવાનું છે, કરતા હરતા છે, તો પછી બોડીનો શું મતલબ? હવે આ ક્વેશ્ચને મને સેવરલ યર્સ સુધી સતાવ્યો. હવે હું ડોક્ટર છું ને, હું બોડીને ટ્રીટ કરું છું ને, અમારા આ તો મારો તો બધા ગુરુ ભગવંત આત્માની વાતો કરે છે, તો આપણે તો શું કામ કરી રહ્યા છે? તો પછી એમાં આપણે શાસ્ત્રનો જે ઉલ્લેખ આવે છે, જેમાં ઘણીવાર આપણે વિરોધાભાસમાં સાંભળીએ છીએ કે આપણા ધર્મમાં ક્યારે બોડીને નિગ્લેક્ટ નથી કર્યું. એ લોકોએ બોડીને આપણે ક્યારે નિગ્લેક્ટ નથી કર્યું, પણ એનું મમત્વ આપણે ઓછું કરવાની રીત બતાવી છે કે એના ઉપર આપણે કઈ રીતે આપણું મોહ ઓછો કરવો. પણ એ ઇટ્સ અ વેહિકલ. તો જેમાં આપણે શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ આવે છે પિંડસ્થ કરીને. તો પિંડસ્થ એ જે શબ્દ છે આપણો, જેને આપણે કહીએ છીએ બોડી ઉપરનું ધ્યાન, એના ઉપર આપ જરા વિસ્તારમાં અમને સમજાવશો? ओके, सी पिंड, पिंड का मतलब है जत्थो. वर्ड पिंड मीन्स
it's a structure basically. The real meaning of pind is that. કારણ કે આપણે નામ કર્મમાં પહેલા પિંડ પ્રકૃતિઓ વાંચતા હોઈએ છીએ. That's how we start નામ કર્મ. Now when we talk about પિંડસ્થ, actually આપણે જ્યારે પૂજા કરવા જતા હોઈએ અથવા તો આપણે ભગવાનની પ્રાર્થના કરીએ ત્યારે આપણને એક ઇનિશિયલ સ્ટેજ ટુ સ્ટાર્ટ વિથ, તો કેવી રીતે શરૂઆત કરવાની? તો કે પહેલા ભગવાનના પિંડસ્થ સ્વરૂપને સમજવાનો પ્રયત્ન કરે. એટલે સ્ટ્રક્ચર છે. આપણી સામે એક મૂર્તિ છે, આપણી સામે એક ચિત્ર છે, આપણે એ વસ્તુને સમજી અને એના ઉપર આપણે ભાવ પ્રગટ કરવાનો છે. એટલે આપણને જે ત્રણ પૂજાના પ્રકારો, ત્રણ પૂજાના જે ત્રણ સ્ટેપ્સ બતાવ્યા છે, એમાં પહેલું આપણને બતાવ્યું પિંડસ્થ, પછી આપણને બતાવ્યું પદસ્થ અને પછી આપણને બતાવ્યું રૂપાતીત. Now try to understand. As a beginner, I cannot develop or understand Siddhatva, that is Rupatit, or I may not even able to understand Tirthankar Pada, because I don't know anything about what Tirthankar is all about. So to start my Shraddha, to start initially my journey to the spirituality, what we talk about is Pindastha. In Pindastha, actually, what we, in our literature or everywhere, we talk about Janma. ભગવાનનો જન્મ, પછી એની સ્નાત્ર પૂજા હોય, એ ભગવાનની જે મૂર્તિ છે એને આપણે દ્રવ્ય પૂજા કેવી રીતે કરવાની. So that's a beginning. Now that is as far as our puja part is concerned. Now you asked another question about કે આપણો બોડીનું what's the meaning of our life. Now try to understand કે અનંતા ભવ પછી મનુષ્ય ભવ મળે, અને એક મનુષ્ય ભવ જ એવો છે કે જ્યાંથી તું મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે અથવા તો મોક્ષ પ્રાપ્તિની તૈયારી કરી શકે છે. There is no other ભાવ ત્યાં તને મોક્ષની પ્રાપ્તિ મળી શકે. Now as you rightly mentioned, body is vehicle. Body સાધન છે, સાધ્ય નથી. One thing. Second thing which is very important, જૈન ધર્મની અંદર ક્યારે પણ બોડીને નિગ્લેક્ટ કરવાની, બોડીને છોડવાની કે બોડીને તપ આપીને એટલી દુખી કરો એવી વાત ભગવાને આખા આગમ શાસ્ત્રમાં ક્યાંય આપણને કરી નથી. As long as you are capable for spiritual growth, તારી આધ્યાત્મિક સાધના તું જ્યાં સુધી કરી શકે છે, તારામાં એ પ્રકારની જ્યાં સુધી શક્તિ હોય ત્યાં સુધી તારે બોડીને સંભાળ રાખવાની છે, એવી વાત ભગવાને શાસ્ત્રમાં દરેક જગ્યાએ કરી છે. એટલે જ્યારે તપની વાત આવે ને ત્યારે હંમેશા આપણે કહીએ કે યથાશક્તિ કરવાનું છે. હવે પિંડસ્થનો એક થોડોક અહીંયા એક બીજો પણ તમને એક અર્થ સમજાવું જે આપણા સાહિત્યમાં આપેલો છે કે પિંડ એટલે કે જે ઉદાહરણ કેવું આપે છે, कैसा उदाहरण देते हैं, माटी पिंड है. अभी उसमें से आपने घड़ा बनाया तो वो हो गया पदस्थ, यानी कि यू मेड सम इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर आउट ऑफ इट. और बाद में रूपातीत, यानी कि पानी के घड़े में आपने पानी भरा. इसी प्रकार से हमारा जो मनुष्य जीवन है वो पिंडस्थ है. तीर्थंकर पद प्राप्त करने का या तो संकित प्राप्त करने का वो हमारा पदस्थ है, और बाद में सिद्धत्व को प्राप्त करना उसे हम रूपातीत कहते हैं. तो इस तरह से पिंड शब्द का बहुत महत्व हमारे शास्त्रों में दिया गया है. સો ઇન્ટરેસ્ટિંગલી, એટલે બિપિનભાઈ આમાં સમજવાની વાત એ છે કે આપણે પહેલા જે સ્ટાર્ટ કર્યું એમાં આપણે આત્માની વાત કરીએ છીએ, જ્યાં આપણે બોડીથી અલગ થયા. હવે પિંડસ્થમાં આપણે પિંડ એટલે આપણે જે શું છે સમજ્યા. તો આમાંથી આપણે એક ટેક અવે એ લઈએ છીએ કે આપણી જે પરસેપ્શન છે, આપણું હ્યુમન બોડી જે બધું છે એ જ તૂટી ગયું. નંબર 1માં તો સૌથી પહેલા તો આપણે એ જ તોડવાનું છે કે આ જે દેખાય છે એ જ નથી. સૌથી પહેલા આપણે સમજી ગયા. તો આઈ થિંક આ કોન્સેપ્ટ જ્યારે આપણો ક્લિયર થાય છે કે જે દેખાય છે એ નથી, તો એનાથી આપણું ઓટોમેટિકલી વેલબિંગ શરૂ થતું હશે. ડોન્ટ યુ થિંક સો કે આપણી ખાલી માન્યતાથી? એબ્સોલ્યુટલી. સી મેં જેમ કહ્યું ને એ પ્રમાણે કે આપણે જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિની શરૂઆત, ધ સ્પિરિચ્યુઅલ બિગિનિંગ સ્ટાર્ટ્સ વિથ પૂજા. It's common, it's very common, right? અને એને એ પિંડસ્થ ભાવથી એની શરૂઆત થશે. હા, બરાબર છે, એ દ્રવ્ય પૂજાની સાથે સાથે ભાવ પૂજા બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Now see, I'll tell you again, in puja also, when we talk about bhava puja, before that we have a dravya puja, where the physical well-being and the mental well-being comes over here. Though we have no time to discuss so many things, પણ આપણે ખમાસણા લેતા હોઈએ
આપણે જે રીતે વંદના કરતા હોઈએ, આપણે પ્રતિક્રમણમાં જે પ્રકારની મુદ્રાઓ હોય છે આપણી, everything has a science in it. It is not something that we are just doing it like actually. જેમ આપણે પગે પણ કેવી રીતે લાખવું જોઈએ, આપણે ગુરુ વંદના પણ કેવી રીતે કરવી જોઈએ, everything has got a detailing of it. અને unless and you don't have detailing, it's not, if it is not properly done, it cannot. So you start with sharir shuddhi, you start with mana shuddhi, and then you reach to atma shuddhi by a process what we call worshipping. So that brings me to our third segment, બિપિનભાઈ, કે આપણે હવે આ જે તમે જેમ વાત કરી આપણી ક્રિયા છે, જેમ કે આપણે વાંદણા આપવા, પ્રતિક્રમણમાં કૌશક કરવો, કાયોત્સર્ગ કરવો, that comes to the question basically આપણે તમે જે મેન્ટલ વેલબિંગની વાત કરી રહ્યા છો. હવે આપણે મારે એક તમને પાસે એક જાણવું હતું કે આપણે અત્યાર સુધી જે ડિસ્કસ કર્યું એમાં આપણે બોડીથી અલગ રહ્યા અને બોડીનું એક્ઝેક્ટલી આપણે હ્યુમન બોડીની બિયોન્ડનું સમજ્યું. તો is it necessary that we should call this only from the angle of spirituality, or we can also term કે આ એક પ્રકારનું સાયન્સ છે જેને સમજવા માટે એક આસ્તિક ભાવ જોઈએ આપણને? Yes, see, basically I always, હું તો જ્યાં બી લખું છું ને, wherever I write, I usually write, very simple word. Jainism, a science of happiness. My keyword is always like this. Why do I say science? And when you say science, it includes all the sciences or special sciences. So basically and truly speaking, જ્યાં સુધી આપણું શરીર સારું ન હોય ને ત્યારે આધ્યાત્મિક કામ પણ આપણાથી થઈ શકતું નથી, જેને આપણે સામાન્ય ભાષામાં અંતરાય કર્મ પણ આપણું જો આવતું હોય, વીર્યાંતરાય કર્મ, તો એ વીર્યાંતરાય કર્મને જ્યાં સુધી ઓછું ન કરીએ ત્યાં સુધી આપણે ઇવન બધી સગવડતાઓ હોય છતાં નથી ઉપવાસ કરી શકતા, નથી આયંબિલ કરી શકતા, કે નથી આપણે કોઈ પણ પ્રકારની સાધના કરી શકતા. સો નીડ ઓફ અ બોડી, નીડ ઓફ યોર માઇન્ડ, ઓર કમ્ફર્ટ ઓફ યોર માઇન્ડ. આપણે જયારે 12 પ્રકારના તપની વાત કરતા હોઈએ છીએ ને, when we talk about 12 types of penances, બાહ્ય તપ are not really external. The meaning of બાહ્ય તપ is preparing yourself to go for the internal penances. એટલે જ્યાં સુધી મનની સ્થિરતા ન હોય, શરીરની સ્થિરતા ન હોય, ત્યાં સુધી આત્મસ્થિરતામાં જવું બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે, સ્પેશિયલી ઇન ધીસ એરા. તો હવે બિપિનભાઈ, આપણે જ્યારે તમે ભાવની વાત કરો છો તો એક પ્રશ્ન હવે આપણો એ આવે છે, બહુ કોમનલી આજકાલ આપણા બધામાં પ્રચલિત છે, ઓરા અને લેશિયા. જેમ કે હવે આ ઘણા સાયન્સમાં ઓરા ક્લેન્ઝિંગની વાત આવે છે, ઓરા હીલિંગની વાત આવે છે, જેમ કે આપણે એને કેટેગરીઝમાં કરેલું છે, જેમ કે પ્રાણિક હીલિંગ થઈ ગયું, ચક્ર ધ્યાન થઈ ગયું. બેઝિકલી બધું તમારી શુદ્ધ ઓરા, આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિને કહીએ કે તમારો આનો ઓરા કેટલો પાવરફુલ છે કે કેટલો તેજ છે, તો મેન્ટલ વેલબિંગની દ્રષ્ટિથી જોઈએ આપણે તો આમાં ઓરા અને લેશિયાનો શું ભાગ રહેશે આમાં? Basically, I could see a picture which you have put over here. It's a very typical picture of jambun tree, where 6 people are passing from a forest and they are hungry and they want to eat jambu. The one who is very violent says that we'll cut the whole tree, and the one who is the least violent says that why even cut a tree? Whatever are there on the ground, we will eat those jambuns. So ultimately, I will first focus on the word lesia, and then I'll focus on the word aura, because basically both the words are very, very different from the Jain's perspective, and we are many times confused about these two. So first, let me tell you, if somebody asks me what is lesia, I simply say it is a measurement of a violence. It is a measurement of the violence which you are having in your mind. હવે એનાથી પણ બહુ સરળ ભાષામાં સમજાવે, લેશિયાને બહુ સરળ ભાષામાં સમજાવી શકાય એવું છે. લેશિયાનો એક અર્થ છે સ્વભાવ, મારો સ્વભાવ. જેટલા જીવો એટલી લેશિયા, અને અનંત લેશિયાઓ છે. લેશિયા આપણે 6 કેટેગરી તો એની મેજર કેટેગરીમાં એને ડિવાઈડ કરી, જેમ અનંત દ્રવ્યોને આપણે 6 કેટેગરીમાં ડિવાઈડ કર્યા, એવી રીતે અનંત લેશિયાઓ છે. એ અનંત લેશિયાઓને આપણે 6 મેજર કેટેગરીઝમાં ડિવાઈડ કરીએ છીએ. Now Jainism believes that you get a lesia according to the birth you have. Tiryansh and Manusya can have all 6 lesias. એટલે બધી શુભ અને અશુભ બંને લેશિયાઓ હોઈ શકે. દેવ હોય એને શુભ લેશિયા જ હોય,
અને નારકી હોય એને અશુભ લેશિયા જ હોય. આ નિયમથી હોય. હવે જો નારકીની લેશિયા અને દેવની લેશિયા એવી છે ને કે એકવાર એને જે જીવનમાં હોય ને તે આખા જીવન પર્યંત સરખી જ રહે. જ્યારે આપણી લેશિયા, એટલે આપણે મનુષ્યની જ વાત કરીએ, આપણી લેશિયાનો આપણે ક્ષયોક્ષમ કરી શકીએ છીએ, ક્ષય પણ કરી શકીએ છીએ, અને મોહનીય કર્મને કારણે ઉત્પન્ન થતી હોવાથી એનો આપણે ઉપશમ બી કરી શકીએ છીએ. તો આપણો સ્વભાવ છે એ આપણી લેશિયા છે. અને એમાં એક બહુ સરસ વસ્તુ આપણને કહેવામાં આવી છે કે તારું આયુષ્ય કર્મ જ્યારે બંધાય એ સમયે તારી જે આયુષ્ય કર્મ આપણું જ્યારે બંધાય ત્યારે આપણી જે લેશિયા હોય એ લેશિયા મરણના અંતે આવે. મરણના અંતે આવે અને પછી નવા ભવની અંદર અંત મુહૂર્ત સુધી એ લેશિયા આપણી ટકે. એટલે દાખલા તરીકે સી આઈ ગીવ એક્ઝામ્પલ ધેટ સપોઝ આઈ હેવ બોન્ડેડ આયુષ્ય કર્મ રાઈટ નાઉ, અને અત્યારે હું જે લેશિયામાં હોય એ જ લેશિયા મારી મરણાંતે આવે અને એ પછી અંત મુહૂર્ત સુધી હું જયારે બીજા ભવમાં જાઉં ત્યાં અંત મુહૂર્ત સુધી રહે, અને પછી મારો જે પણ ભવ હોય, નારકીનો ભવ હોય કે દેવનો ભવ હોય કે તિર્યંશનો ભવ હોય, એ પ્રમાણે મારી પાસે 6 લેશિયાઓ આવવાનું that's a possibility. In short, લેશિયા is nothing but कषाय जनित आत्म परिणाम. वेरी सिंपल. कषाय जनित आत्म परिणाम. मेरे कषाय के कारण मेरे आत्मा के जो परिणाम होते हैं उसको हम लेशिया कहते हैं. तो ये लेशिया की बात हो गई. अभी देखिए, इन शॉर्ट अगर कोई मुझे पूछे लेशिया का मतलब क्या है, मैं कहता हूँ सिंपली लेशिया डिसाइड्स योर पर्सनालिटी, and maybe that personality at that particular moment of time, because as I told you, और एक चीज कहना चाहता हूँ, कोई भी लेशिया अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं रह सकते. इसके लिए तो हम 48 मिनट की सामयिक करते हैं, क्योंकि अगर हमारी शुभ लेशिया 48 मिनट से ज्यादा रहती है तो हम वितरा गए, हम सदमस्त है ही नहीं. तो लेशिया का साइंस बहुत सिंपल है, लेकिन हमने काफी उसको, ये आपने जो दूसरा प्रश्न पूछा कि ऑरा के साथ हम उसको कभी कभी रिलेट कर देते हैं, तो मैं आपको एक ऑरा के बारे में भी 2 शब्द कहूंगा. व्हाट इज ऑरा? एक डॉक्टर, आप भी डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूँ. व्हाट इज ऑरा? ऑरा इज एक्चुअली जो हमारी जो फिजिकल बॉडी है और हमारी साइकिक बॉडी है, हमें 2 बॉडी, वी कैरी ऑन विद 2 बॉडीज एक्चुअली. और एक शब्द भी यूज करते हैं, व्हाट वी कॉल द फिजिकल बॉडी एंड एस्ट्रल बॉडी. Now, because of our physical body and our astral body, there are certain rays are emitted from our body. The rays, which you can even pick up nowadays. We have got a camera which can pick up this aura. And there is a big science now developing that, from this aura or from whatever you have picked up as an image, you can decide certain things about your body. But still this science is in a very initial stage. तो ये हमारे जो पुद्गल है, 3 चीज यहाँ ये ख्याल रखना है. देखिए, हमारी फिजिकल बॉडी में एवरी मोमेंट हम परमाणु का बंद करते हैं, यानी कि पुद्गल का बंद करते हैं. हमारे पुद्गल हमारी सत्ता में भी है और हम पुद्गल की निर्जरा भी करते हैं. सो दैट मीन्स फॉर एवरी सेकंड और मोमेंट योर ऑरा वुड ऑल्सो चेंज. तो ये आज एक बड़ा साइंस है डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए. और जैसे आपने बताया, there are many people who use this science to create things by which they can get rid of diseases. So we are in the beginning stage, but yes, somewhere we'll definitely go ahead on this. So Bipin bhai, here, sorry, I'm interpreting you in English right now because many viewers want that at this moment. Okay. Now, Bipin bhai, at this junction, I want to take an example, and let's take an example and fit our 3 theories which we discussed, ki how we are different Atma from the physical self, and how we have to, what we have to concentrate on, and what aura and lesia. So basically, let's take an example. If a person, જેમ કે આજના રોજના ટાઈમમાં we see a person who is having fear is a fearful personality, એમને ડર બહુ છે, ટેન્શન બહુ જલ્દી આવે છે, is in constant stress, that plays a role on his body in terms of, say for example, he has a thyroid problem, and then we correlate, okay, the thyroid problem છે એટલે આ માણસને થોડો stress level છે, થોડું depression જેવું છે, he's fearful, so his thyroids go up and down, he starts developing cholesterol, high BP, diabetes. So these comorbid factors which are coming,
many people like to know now when we are trying to discuss કે આપણે બોડી આત્માથી અલગ છે, તો આત્મામાં આ બધી ચીજો જે થાય છે એ આપણા બોડી પર કઈ રીતે દેખાય છે આપણને, તો આમાં બોડી, મન અને આત્મા ત્રણોને આપણે કઈ રીતે કોરિલેટ, આમ સિમ્પલ ભાષામાં અગર કરીએ ને આનાથી આપણે શું આપણી કઈ રીતે એલેશિયા, કઈ રીતે ઓરા, કે કઈ રીતે એ જરાક આનું સાયન્સમાં આપણે અગર સમજવાની કોશિશ કરીએ તો આપણે કઈ રીતે આપણે સિમ્પ્લિફાઈડ કરી શકીએ? Okay, it's a very good question. First of all, we should, when we say that Atma, or the body and soul are different, we have to understand that we are talking not of a kind of a body which we are possessing right now. Okay, your question is very valid. See now, let me put the other way around. There are four kinds of bhava. Bhava is swarup. Bhava is swarup. And in Swarupa, we use the word four Swarupa, what we call Audarika Swarupa, Shayokshamic Swarupa, Chaik Swarupa, and Upshamik Swarupa. These are the four kinds of Swarupa. Swarup Bhav is Swarup. Now, when we talk about Chaika, we mean that where we have destroyed all our karmas. That's Siddhatva. Otherwise, we are always affected by the karmic particle which we have, what we are possessing along with our body, and the karmic particle has an influence on our soul. Vice versa, the soul has an influence on our karmic particles. They are both are influencing each other. Now, let me give you an example, simple example. Suppose there is a fright. Now, what happens? The fright has gone into your mind. The brain is an organ to receive it, right? But because Atma or the soul is not a pure soul, it gets frightened. It gets tinges with the leshyas. Monia karma. Fright is nothing but monia karma. It sends back the impulses, which we call hypothalamus, pituitary, and the other organs axis. The fright would increase your blood pressure. The fright would increase your pulse. The fright will increase your body activities or the hyperactivities. So there is a definite relationship as when your body is, or the soul, let's not use the word even body, when the soul is bonded with karmic particles, that will affect. Sometimes we say that akashaya, Tirthankar has no effect on that because it's an idiopathic karmas. While we do not have an idiopathic karmas, we bind, we absorb, and we react. Each and every action of our, today only I was reading that previously we were, in medical science, we used to say that these are the psychosomatic diseases, few of them. Gradually we learned that not few, many are psychosomatic diseases. Now we almost say 95% of the diseases are psychosomatic. So gradually we are coming to understand that the soul and mind are not working independently as far as our body is concerned. They work together, and if you really want to have a good effect on your body, you need to even clean your soul. So again, let me come back to you. Tirthankar Mahavir's sole purpose was nothing to do with body. His sole purpose was to cleanse your soul. And how to cleanse your soul? You only give a very simple solution. See, we have confused a lot. We have confused everything a lot. Mota shastro lakine, we have gone to something. I'll tell you a very small story. All people would like it. બહુ નાની સ્ટોરી છે, પણ બહુ સરસ સ્ટોરી છે. એ ગામડાની અંદર એક અભણ માણસ હોય છે, એ ગાયો ચરાવવા લઈ જાય છે. ગાયો ચરાવવા લઈ જાય છે, તેને ગણતા આવડતી નથી. તો he asked somebody, સામેથી એક શિષ્ય અને પંડિત આવી રહ્યા હતા, એને પૂછ્યું કે જરા મારી ગાયો ગણી આપો ને. એટલે પંડિતે કહ્યું હું નહીં ગણી આપું, મારા શિષ્યને ગણવાનું કહું છું. તો પેલો 1 2 3 એક એક ગાય ઉપર હાથ રાખી અને પેલો ગણતો હતો. તો પંડિતે પૂછ્યું ભાઈ શું કરે છે? તો કે સાહેબ હું ગાય ગણું છું. તો કે આવી રીતે ન ગણાય. તો કે કેવી રીતે ગણાય? તો કે પેલા પગ ગણ અને 4 થી ભાગ. પછી કે તને ખબર છે પગ કેવા છે? તો બાય ધ ઇવનિંગ ધ ફેલો ફોરગોટ what he is supposed to do. એટલે આપણા જૈન ધર્મમાં છે ને આવું બધું થયું છે, એટલું બધું કોમ્પ્લિકેશન કરી નાખ્યું છે. આજ ટેલ યુ, ભગવાને 2 જ શબ્દની અંદર વાત કરી છે, રાગ અને દ્વેષને છોડ, એ જ તારો ધર્મ છે. અને બીજી બહુ સરસ વાત કરી છે, તું એટલો બધો સશક્ત થઈ જા,
that nobody can hurt you and you don't hurt anybody. A simple. Jainism is not so complicated as we think. આટલા બધા શાસ્ત્રો ભણવાની ઠીક છે, સારું છે, ભણીએ ત્યાં સુધી, પણ રાગ અને દ્વેષને નહીં સમજીએ ત્યાં સુધી જૈન ધર્મ ક્યારેય સમજાશે. એટલે બેઝિકલી આપણે મેડિકલમાં પણ કહીએ ને, સમટાઈમ્સ ઇટ ઇઝ ઓકે નોટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ મેની થિંગ્સ ઓલ્સો ઇન લાઈફ. Ignorance is bliss. Ignorance is bliss. That is also correct. So yeah, I mean, all the young audiences, Bipin bhai, today's in time and age, they want basically after whatever discussion we are having here right now is very, I think, importantly pointing out to the fact ki you need to explain things. Yes, correct, but do not look at the science, that science has answers for everything, and what can be seen or what can be proven in a lab only exists. Now existence is basically your, and in our discussion today we are starting with the point ki what you cannot see, you have to first believe that and start. So it's, I think the belief system of ours is very important for our coping strategies. कि आपली जे coping strategies છે, belief system, આપણી આસ્તિક ભાવ જો અગર આપણો પાયામાં હશે, this faith of ours, then I think, as we are discussing, that physical being and mental well-being is just a manifestation. But and the science just follows also that we understand the soul, we try, obviously we cannot understand the soul in completion, because obviously then we are vitrag, but if we try to understand it more better throughout our journey, rather than just focusing on the flesh and the bones which we have, though we cannot be hypocrite though being of the field of science, but we know the importance of it. It's all we have to weigh the importance કે કેટલું છે એનું. સો બિપિનભાઈ, હવે પણ મોડર્ન ડે ની વાત કરીએ છીએ. હવે આપણે તો બધે ઇન્ટરનેશનલ યોગા ડે ચાલુ થઈ ગયો છે. બધા ઉપર નીચે શીર્ષાસનો જેટલા આજ સુધી થયા નથી, બધા શીર્ષાસન ચાલુ થઈ ગયા છે અને બધાને લાગે છે that's the way to living. હવે યોગા બધે ચાલુ છે. મારી એક ક્યુરિયોસિટી હતી કે પતંજલિનું જે योग शास्त्र છે, કે पतंजलि का जो योग शास्त्र है और उससे जैन योग, like since childhood, I mean, I was very curious કે હું નમુથોણમ કરું છું તો નમુથોણમ આમ જ કેમ બેસું છું, કે why only the left leg and why not the right leg, and you know, why am I in this position? But then when I read about it, there was a science behind it, you know, thinking, your mental bhav and everything. So in today's time, can you just highlight a bit on Jain yoga, which is slightly different and which is not just emphasizing on asanas, but how does Jain yoga also lead us to understanding of physical and mental well-being? It's a very interesting question, Dhairav. First, let me tell you, if you read Patanjali Yoga Sutra, asan, what Ramdev Baba is doing for the physical health, it's good. We are not against it. It's only a fraction of that. It's not that whole yoga. If you read the whole Yoga Sutra, you can say the asana is only 5% of it. And we only try to understand that 5%. That's all. No, yoga is not only that what we see in a practice, what's going around actually. So even to say that, Patanjali Yoga is only asana is wrong. Yoga started with Atma Yoga. The body or asana yoga is also known as Hatha Yoga. Hatha Yoga is not so very important as far as even Patanjali is. So first of all, that part we should be very clear. I read Yama, Niyama, Asana, Pranayam, Pratyahar, Dhyan, Dharana, Samadhi. I mean, all 8 stages, if you read, asana is a very small part of it. Okay, leave it that to Patanjali. Now let's try to understand Jaina Yoga. See, basically, yoga is also a cause of ashram. आश्रम के जो 5 कारण है वहां कहते मिथ्यात्व, कषाय, अव्रत, प्रमाद और योग, वहां योग शब्द आता है. योगस्य आश्रव, ये वो जो तत्वाद सूत्र का 6ठा अध्याय में वहां से तो शुरू होता है. यानी कि योग को आश्रव का कारण कहा गया, कर्म आने का कारण कहा गया. लेकिन एक समय ऐसा हुआ, हरिभद्र सूरी महाराज साहब के पहले पातंजलि योग बहुत प्रसिद्ध हो गया और लोग सोते ये सिंपल चीज है, यम से समाधि जाना. तो पतंजलि योग started becoming very popular at that particular time. Haribhadra Suri ji Maharaj Sahab redefined the Jain Yoga. Jain Yoga, if you see in Agamas and if you see even in Tattvad Sutra, the latest Sanskrit scripture,
the definition of the yoga was very different. But Haripadra Suri, looking at the time, how the people were, diverting to the other philosophy, redefined the yoga. Now, what he said, he gave some 10 definitions of yoga, right from the common man to the most spiritually awakened person. Yoga Sutra, Yoga Bindu, Yoga Sar, Yoga Vichinka. He wrote six major books on the yoga, which अगर आप शुरुआत करते हैं तो आपको योग सार से शुरू करनी है, और आपको ज्यादा पढ़ना है तो योग बिंदु पढ़ना है. So that was the chronology in which he prepared the book on yoga. But let us not go into that details. Simply, what is Jain yoga? Any activity of mind, body and speech. Try to understand. Any activity of mind, body and speech which leads to the spiritual enlightenment or moksha is called Jain yoga. He redefined the whole yoga. And what he did? He said mana, vachana, kaya. In mana, he gave the emphasis to various meditative practices, what we do today. Samayika, Pratikraman, Swadhyay, Dhyan, Kaushag, Prekshadhyan, and number of them are there actually. In Vachan, he gave two very important concepts. One, he said, Vachana Gupti, which was already there in three Guptis. So he talked about Vachana Gupti. And second thing, he emphasized on Mantrochar. Negativity means don't speak is mouth, but speak properly, which can help you, is called Mantrochar. And as far as the Kaya is concerned, obviously we have plethoras of things like all our diet rules and things like that. So Patanjali ultimately said, हमारे जो भी निर्जरा के कारण है, हमारे जो भी संवर के कारण है, they are Jain yoga in simple language. So if somebody asks you Jain yoga में, हाँ अभी see today we are trying to say कि जैन में भी योग है, तो क्या कहते हैं, हमारे खमाशना जो करते हैं हम, या तो वंदिती सूत्र करते हैं, वहां जो भी प्रकार के हम पोस्चर्स है, या तो हमारी जो भी मुद्राएं है, वहां योग है. But I'll tell you, it's Jainism is much beyond this actually. ये आसन की छोटी छोटी बातें जैनिज्म का डोमेन में आती ही नहीं है. ठीक है, बिगिनर को समझाने के लिए कि भाई देयर इज जैन योग ऑल्सो, जो रामदेव बाबा कह रहे हैं या तो कोई अन्य योग के गुरु कह रहे हैं, वो हमारे में भी है. इनिशियल स्टेज इज फाइन, बट जैन योग इज वेरी ब्रॉड. मन भी है, वचन भी है, काया भी है, तीनों की शुद्धि होती है, तो आत्मशुद्धि की तरफ हम बढ़ सकते हैं. दैट इज जैन. So Bipin bhai, now let's ekdam, I think we cleared many of our concepts though. It was a slightly this thing. Let's be practical. अबे मैं आपका पेशेंट बन के आने वाला हूँ अभी, और आप मेरे को आप जैन प्रिस्क्रिप्शन देंगे. पर उसके पहले बिपिन भाई, there is a lot of talk on mantra vignan. Now mantra and tantra appeals to the public very easily. Okay, so why is it that now we discussed about aura, lesha, soul, karmic bondage, and how it's Spandan ni tame baat kari. So I want to discuss three things with you: mantra, tapascharya, and movement. Like mantra vignan, if we are talking about like chanting of logos, uvasagaram, bhaktamar, and we can see today that we have evidences that it is producing healing effects in the body as well. One, I would like to understand that from you. Second, today everybody, I mean, out of 10 patients I see 8 people are on diet, some sort of dieting they will do, intermittent fasting, keto diet, all the fancy names have come in. And I always wonder, how is tapascharya or apru tap related to this? And third, as we were just discussing about the yoga, basically like how to move into the asanas or something, as you just highlighted. तो आपके पास से ये तीन चीज मुझे जाननी है कि मंत्र, तपश्चर्या और मूवमेंट. ओके, मंत्र विज्ञान के ऊपर आप थोड़ा सा रिफ्लेक्ट. पहले तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड मंत्र. मंत्र का मतलब है मंत्र, मन का मतलब है माइंड, त्र का मतलब है इज टू प्रोटेक्ट, मंत्र का मतलब है दैट विच प्रोटेक्ट्स योर माइंड. वेरी सिंपल. मंत्र का एक और मीनिंग है
हम कहते हैं ना ये मंत्री है, मंत्री का मतलब द पर्सन हु सजेस्ट यू. सो वॉट एवर योर माइंड सजेस्ट यू इज ऑल्सो नोन एज मंत्र. मंत्र में एक चीज सबसे बड़ी ख्याल रखनी है हम लोगों को, दैट मंत्र will work only whenever there is a faith. Without the faith, mantra has no value at all. Now, how does the mantra work? आप तो डॉक्टर है, you are a doctor, right? I'll give you a very simple example. Suppose somebody has got a kidney stone. What do? Now, we have a machine which we call lithotripsy. What do we do in lithotripsy? We pass the sound waves to break the stone. Very simple. I mean, all of us now accept that, right? We are not passing any, we call laser, but there is nothing like a laser. They are the sound waves, right? You and I know. Okay, lithotripsy machine kya hai? So what has happened? That with the sound waves, you can break the stone. Similarly, any mantra is nothing but a phonetic energy. When you have a phonetic energy produced properly, see, it has to be produced very properly. देखिए हम लोग कभी भक्तामृत स्तोत्र भी पढ़ते हैं ना, तो मुझे मालूम है कि एक पहली गाथा के अंदर यू कैन से देयर आर 5 मिस्टेक्स, बिकॉज ये वसंत का राग है, उसको वैसे ही गाना है. पहला दीर्घ है, बाद में मृदु है, नवकार मंत्र का स्मरण भी ऐसे होना चाहिए. सो इफ यू डू इट राइटली, इट क्रिएट्स अ फोनेटिक एनर्जी. फोनेटिक एनर्जी वर्क्स ऑन योर माइंड. And when it works on your mind, again, as I told you, it works on your hypothalamus. When it works on the hypothalamus, 4 important hormones are produced: dopamine, serotonin, epinephrine, and antisteroid hormones. And number of neurotransmitters are created. Ultimately, that leads to the well-being of a person. तो मंत्र जो है वो हमारी physical well-being and mental well-being is always in this. And I'll tell you very frankly, you go to the Harvard, you go to the best universities, they have a number of papers where they very clearly said that the recitation of mantras is very, very useful for a number of diseases. हमारे जो नवस्मरण है, आप चाहे वो सगरम का पाठ कीजिए, लोगस का पाठ कीजिए, नवकार मंत्र का पाठ कीजिए, सब चीज के अंदर एक फोनेटिक एनर्जी. और वो फोनेटिक, सिंपल एग्जांपल, मानतुंगाचार्य ने क्या किया? मानतुंगाचार्य रिसाइटेड भक्तांबर स्तोत्र इन सच अ वे दैट हिज फोनेटिक एनर्जी कैन ब्रेक द आयरन पिट्स. दैट इज द पावर ऑफ मंत्र. बट समटाइम क्या होता है, हम लोग मंत्र को क्या करते हैं, वी जस्ट रिसाइट देम लाइक अ विदाउट एनी प्रॉपर द वे वी आर सपोज टू रिसाइट. तो मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, मंत्र बोलने की कोई जल्दी नहीं है. 1 मिनट के अंदर 10 बार नवकार मंत्र बोलने की कोई जरूरत नहीं है. Speak the way it is supposed to be spoken in right way, then it will definitely create a positive energy within you, which will be very helpful. You asked the other question was about the tapa. Okay. अभी देखिए तप के बारे में एक बहुत सिंपल चीज है. तप को हमने क्या कह रही है? उपवास करो, आइम्बिल करो, इकाशना करो, अट्ठाई करो, अट्ठम करो, मासकमन करो, उसको ही हमने तप कह दिया. देखिए जो ये तप है, जो डाइट रिलेटेड तप है, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज फाइन, चौवियार इज फाइन. चौवियार को तो मैं तप नहीं कहता हूँ, लाइफस्टाइल कहता हूँ. तो तप के बारे में आता है, इन सब चीज करते हैं, बट दैट एनीबडी कैन डू, एंड इट्स वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ अस टू डू. तो चौवियार ठीक है, लेकिन बाकी के जो तप है जिसको हम तप कहते हैं, what are these तप? Try to understand. We start with अनशन, उणोदरी, रस परित्याग, द्रुति संक्षेप. 4 शब्दों को पकड़ो, पहले बराबर पकड़ो. अनशन का मतलब है खाना नहीं खाना, ऐसा नहीं है, वो तो उसका स्थूल मीनिंग. अनशन का मतलब है टू स्टॉप, टू अवॉइड. उणोदरी का मतलब है टू रिड्यूस. भगवान ने कहा तू स्टॉप नहीं कर सकता है ना, तो उणोदरी का. When you cannot do अनशन, you do उणोदरी. मैं उणोदरी भी नहीं कर सकता हूँ. I cannot even restrict my food. They said that at least restrict the wandering of your desire. देखिए हम मुंबई में रहते हैं ना, तो चलो इधर से पानी पूरी खाई, उधर से पानी पूरी खाई, यहाँ का पाव भाजी खाया. So we are wandering of desires. Third is wandering of desire, and fourth is your intensity of the attachment. અરે સાહેબ આ પાણીપુરી તો એટલી સારી હતી કે વાત ન પૂછો.
That means you have attached yourself to Rasendriya. Now, it is not only for Rasendriya. It applies to all 5 indriyas. Not only for Rasendriya. If you believe that, तो हमारे जो बाह्य तप है ना, वो सिर्फ खाने की बात नहीं करते हैं. Avoid, restrict, control your desires and control your attachment with those things. तो 5 इंद्रियों के लिए हमें ये एप्लीकेशन करना है, अभी हम उसको तप कहते हैं. उपवास का मतलब अनशन नहीं है. उपवास का मतलब है to be near to your soul. And how can you be near to your soul? Only when you control all your senses. 5 इंद्रिय ने मनનો સંયમ થાય ત્યારે બાહ્ય તપ કહેવાય. So this is very very fundamental. पर आजकल क्या हो रहा है, मैंने 8 उपवास किए, मैंने 21 उपवास कर दिए, मैंने 16 उपवास कर दिए. ठीक है, आई मीन आई एम नॉट अगेंस्ट इट. मैं कोई तपस्या, उतना तो संयम का मार्ग लिया ना उसने, तो मैं उपवास के अगेंस्ट नहीं हूँ. बट पीपल शुड बी एजुकेटेड दैट ओनली कीपिंग योरसेल्फ हंग्री इज नॉट अ रियल तप. तप इज मच बियॉन्ड दैट. एंड सेकंड थिंग, मैं ये खास कहना चाहता हूँ, आप भी डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर. You should not do any tapasya beyond the capacity of your body. I have lost patience having done tapasya for a long time without having a practice of it. Actually, मैं डॉक्टर हूँ, एक फिजिशियन हूँ, तो I have a very bad experience with number of people. Second thing, young girls, because I am finding young girls doing tapasya just by seeing कि दूसरे ने किया मैं भी कर दूँ. If you are in the puberty state, and if you do long tapasya, there is a possibility that you damage your ovaries. So one has to be damage your ovaries and thyroid. So you should be very very careful as far as doing long tapasyas or tapasyas for a very long time. And third question you ask about the physical. See, हमारे भगवान ने फिजिकल के बारे में ऐसे देखा जाओ तो कोई स्पेसिफिक बात नहीं की है. एक काया कलेश की बात. काया कलेश का मतलब ये नहीं कि काया को जलाना है तो तब काया को क्षीण करना है. ये भी शास्त्र के अंदर जो लिखा गया है वो एब्सोल्युटली, शास्त्र यानी कि कुछ बुक में लिखा गया है वो रॉन्ग है. काया कलेश का मतलब है आध्यात्मिक परस्यूट के लिए यू प्रिपेयर योर बॉडी, यू मेक योर बॉडी स्ट्रांग, कि आप अच्छे आसन में बैठ सके. देखिए आजकल हम क्या देखते हैं, प्रतिक्रमण करने के लिए लोग बैठते हैं, 1 घंटा बैठ भी नहीं सकते पूरा. करीब से राइट हैंड का सपोर्ट लेते हैं, लेफ्ट हैंड का सपोर्ट लेते हैं, देखते हैं कि कहाँ से ज्यादा अच्छी हवा आती है, देखते हैं कि कहाँ मुझे बैक रेस्ट मिलता है. बिकॉज वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू सीट इवन फॉर 48, आई मीन प्रतिक्रमण का समय में हम स्थिर बैठ नहीं सकते. तो भगवान ने कहा ये प्रैक्टिस कर, ग्रेजुअली यू शुड प्रैक्टिस so that you can sit in sadhana or to do the spiritual activities. So विपिन भाई, आपके ये एक्सप्लेनेशन से एक बात साफ निकल में आती है कि जैनिज्म बेसिकली इज अ साइंस ऑफ लिविंग and everything is related to a lifestyle which Jainism is giving you. And as we see also in our profession, prevention is better than cure. If you have a good lifestyle, you are away from many diseases of in daily living. Simple diseases which we take, like depression, thyroid, back pains and knee pains, and these, when we go as scientists, we know that it's somewhere related either to their lifestyle, the way they move, they sedentary lifestyle है, खाना पीना नहीं है. तो आपने जैसे सही बताया कि इट्स ऑल अबाउट योर लाइफस्टाइल. आप लाइफस्टाइल में समझ गए, प्रिंसिपल्स को समझ गए, तो ऑटोमेटिकली आप इसके ऊपर वर्कअप कर सकते हैं. पर विपिन भाई, अगर हम थोड़ी मेजर डिजीजेस लेते हैं, जैसे कि आज के, let's talk about the current scenario. 3 things which we are seeing. One is the virus is playing a havoc. Okay. Second thing, that is not only playing a havoc, मेरे हिसाब से वो ज्यादातर मन के ऊपर लोगों को असर कर गया है, and people are going डिप्रेशन में जा रहे हैं, माइंड अस्थिर हो गया है, जिसकी वजह से थोड़ी बेचैनी बढ़ गई है और सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. और थर्ड थिंग हम ये देख रहे हैं कि कई लोगों को, यंग लोगों को, कि थोड़ी थोड़ी आई मीन कैंसर जैसी बीमारी है, या और कई लोग ऐसे भी बोलते हैं मैंने तो जिंदगी में कुछ गलत नहीं किया, कभी धूम्रपान नहीं किया, कभी शराब नहीं पी, कभी मांसाहार नहीं खाया, तो भी मुझे कैंसर क्यों हो गया, और हो गया तो भी. तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं. तो मेरा आपसे ये कहना है कि ये सब जो मेजर डिजीज हो या माइनर डिजीज हो, तो ये सब चीजों में हम कैसे फिट कर पा रहे हैं ये सब कॉन्सेप्ट्स को?
देखिए काल का प्रभाव होता है, पहले हमें ये चीज समझ लेना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज हमें ये समझ लेनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच आई टेल यू, एंड द रिसर्च इज गोइंग राइट नाउ ऑन दैट वी हैव डिस्ट्रॉयड अवर अर्थ more than what we should have. We have destroyed the plantation. The third thing which is coming right now is because of the number of the waves, or the the 5G aa raha hai, and all that has created a havoc as far as the वायुकाय जीव is concerned. ठीक, हम आज तक ओजोन की सिर्फ बात करते हैं। अभी साइंस इज कमिंग आउट विथ समथिंग वेरी इनोवेटिव दैट डिस्ट्रॉइंग द एयर। अभी हमारे भाषा में तो सीधा है, हवा के जीवों को हमने नष्ट कर दिया। दैट इज अ बायो प्रोटेक्टिव थिंग विच इज देयर अराउंड अस। ये वायरस क्यों आया है? तो वायरस इज नॉट, I'll tell you very interesting thing. If you take the weight of all the viruses there are there in this universe यानी कि हमारे planet की बात करें, the total weight is not going to be more than 1 gram. 1 gram virus has been able to destroy the piece of the whole mankind. हमारे एक अणु के अंदर जब भी हम कहते हैं ना कि एक 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 आकाश के एक प्रदेश के ऊपर अनंता पुद्गल के अनंता स्कंद, राइट, अनंता पुद्गल के अनंता स्कंद एक आकाश प्रदेश के अंदर होते हैं। तो दिस माइन्यूट थिंग हैज बीन ऑलरेडी टॉट एंड थॉट इन जैनिज्म। तो आज ये वायरसेस का जो आज हमारे सामने जो आ रहे हैं, वो दिस आर ऑल आवर लाइफस्टाइल डिजीजेस। हमने प्रकृति को बहुत परेशान किया है, न तो संयमित जीवन जिया है, न तो अहिंसक जीवन जिया है। और ठीक है, આપણે ગુજરાતીમાં કહે ને કે લીલા જોડે સુકા જોડે લીલું બી બળી જાય, તો આપણે કદાચ સારા હોઈ શકીએ, બટ જે કાળનો પ્રભાવ છે, એ કાળના પ્રભાવને કારણે, એ નિમિત્તોને કારણે we also suffered. This is one thing. I'll tell you something which I always tell very simply. People ask me a question કે સાહેબ શું કરવાનું? તો હું કહું કે જો ભાઈ બધું કરવાનું, પણ એક વસ્તુ 6 આવશ્યકને યાદ રાખ, 6 આવશ્યક. And I'll tell you, you cannot say that I cannot do this 6 આવશ્યક. 6 આવશ્યક દરરોજ કરવાને, it hardly involves your 1 hour, but the amount of the benefit which you get out of this 6 આવશ્યક, સવારે 1 કલાક સામાયિક કરો, સાંજે 1 કલાક પ્રતિક્રમણ કરો, આખા દિવસ દરમિયાન તમારે કેવી રીતે રહેવાનું છે, લોગસનો પાઠ કરો. I'll tell you, it can create a very, very different. And second thing, you talked about fear. Fear is the most important part to deplete your immunity. Most important part. એક વાર fear આવે ને એટલે બધી immunity તમારી ખલાસ થઈ જાય. So right now we find many people getting into the problem not only because of the corona, but because their immunity has been compromised a lot. Especially पर्यूषण આવે ત્યારે 5 વસ્તુ યાદ રાખો: અમારી પ્રવર્તન, અઠમનો તપ, સાધર્મિક ભક્તિ, चैत्य परिपाटी एंड क्षमापना. अगर आप दिगंबर है तो आप 10 लक्षण पर्यूषण का ख्याल रखो, रूटीनली 6 आवश्यक करो, और जब भी आपका पर्यूषण पर्व है ત્યારે और ज्यादा आराधना कर लो. I'll tell you, you will always remain happy. My age is 70. Okay, I'm happy. I'm happy. Why I'm You happy? look young, Because I Bipin was bhai. because I have a support of my spiritual strength. This is the spiritual strength which I am getting. So Bipin bhai, I think beautifully you have explained and formed the foundations basically which lead to good physical and mental well-being, and we have understood the concepts very well, and I'm sure the viewers can go through it also. Now Bipin bhai, we have a lot of questions which our viewers have and they have been writing comments. So Preeti Ben Mehta and Anila Ben will be coordinating with you on the questions about how our viewers are experiencing. नमस्कार प्रीतिबेन एंड अनिला बेन. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. बोलिए बोलिए बोलिए, आपके क्वेश्चंस बोलिए. Yes, so Bipin bhai, I have many questions, but I will wait for my questions a little later. First, we will take some audience questions. Okay. Dipti Shah is asking on behalf of her son Aditya. There are so many people who are going through depression day in and day out. They have given up on the existence of a higher power because it hasn't eased what they are going through. They have absolutely no money problems, but still go through mental health issues to that point that they are at the edge of suicide most of the time. The only thing that helps, they think, is
therapy. What does Jainism have to suggest on this? See, basically, the growth of the child in the family is a very important part, actually. I'll tell you, whatever you may do, unless and until the growth of your child in the family is not right, it's very difficult to think about Jain principles to be applicable for them to start with. So first, I would say that they should go to a good counselor. Don't try to do something which cannot work to the person very easily. If a person has got a suicidal tendency or things of that kind, he should first go to a counselor. After the counseling has started, gradually you can start the spirituality, and something basics can be started, that how to calm down your mind by a process which is called samayik. Now the boy may not understand what samayik is all about actually, so you have to actually explain them the concept of samayik rather than telling him to ratta samayik, so explain them the concept of samayik, explain them the concept of pratikraman, explain them that there is something divine within. You don't have to even say that there is something divine outside. There is something which is there within, and it can really correct yourself. So you have to create an confidence in the person. But yes, don't do only with spirituality. Take the help of medical science or the modern science which exists as on today. Combine both the things together. Yes, next question. विपिन भाई, अभी ऐसा जगह जगह पढ़ा जाता है कि उपवास अन्न का ही नहीं, बुरे विचारों का भी करना चाहिए. आप जरा इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए. मैं वही कहा कि देखिए, तप का मतलब जो बाह्य तप हम कहते हैं, मैं फिर से रिपीट करना यही चाहता हूँ. अनशन, गुणोदरी, रसपति, परित्याग, रुति संक्षेप, काया कलेश और प्रतिसलिंगता. यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ खाने की बात नहीं करते हैं, हम पांचों इंद्रियों के संयम की बात करते हैं और मन की बात करते हैं. जब भी हम प्रतिसलिंगता कहते हैं तो क्या कहते हैं? कषाय को कम करना है, यानी कि मन की शुद्धि. काया कलेश से हमको शरीर को शुद्ध करना है, और पंचेंद्रिय का जो विषय है उसमें हमें अनशन, गुणोदरी, रस परित्याग और रुति संक्षेप करना है. यानी कि मैंने ये देखिए, ये इट्स लाइक 5 इंद्रियाज एंड 4 स्टेप्स. सो 20 पेपर्स हो गए, 20 स्टेजेस हो गए. हम लोग 20 में से सिर्फ एक को पकड़ते हैं, अनशन को पकड़ते हैं. हाँ, और बाद में कहते हैं कि ओ आई विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स. नहीं भाई साहब, आपने एक पकड़ा है, अच्छा है, मैं ये नहीं कहता हूँ, कोई तो एक भी नहीं पकड़ते हैं. आपने एक पकड़ा तो अच्छा है, लेकिन ख्याल रखिए आपको एक में पास नहीं होना है. देयर आर अनदर 19 पेपर्स वेयर यू आर सपोज टू पास. कभी लोग क्या करते हैं, अच्छा ठीक है आज मैंने उपवास तो रखा है, लेकिन आज टाइम पास कैसे करूंगा, पिक्चर को चले जाते हैं, टीवी देखते हैं, मूवी देख, आई मीन they try to get into some entertainment things. Now that is not allowed as far as your penances are concerned. Penance is the cause of निर्जरा. Penance कोई संवर भी नहीं है, ये तो निर्जरा है, आपके कर्म को खपाना है. तो इट्स मच हायर लेवल. लेकिन फिर भी मैं जो भी व्यक्ति एक भी उपवास करती है, मैं उसको वंदन करता हूँ, लेकिन उसको ये भी सिखाता हूँ कि what you have been doing is a fraction of real penance. Vipin Bhai, Pooja Jain is asking, in this corona situation, people are saying to eat at night and also to eat ginger and garlic for immunity. To what extent is this true? First of all, to eat at night is never advocated, even by me. I am a physician. I don't find any literature where we advise somebody to eat at night. So that is out of question. However, let me tell you one thing, that those who are having a low immunity, you may allow them to eat at night, but there is nothing that which helps you to eat at night. So that part is over. Now the second part, you asked about ginger and garlic. Okay, garlic. First of all, garlic has no role to play. If you want to really increase your immunity, you have to eat tons of garlic, which nobody can eat actually. So ये लसोना और ये सब जो आया था ना, it was all face wash actually. So garlic has no role to play. Now comes to the adu or ginger. I'll tell you, in our Shastra, actually we are not allowed to have the wet one or the fresh one. We are allowed to have the dried one. So ginger in a dried form has an equal effect than ginger in the wet form or the fresh form.
right? So that is one thing you can avoid having. Soot kahiye apne jene, instead of ginger you can use soot. So again, another thing, that ginger or things of this kind are allowed in our shastra at many places, because that we will use only as a medicinal value, only little, and એનું બી પ્રાયશ્ચિત કરી શકાય છે. So if the person says that I want to have a ginger, my first suggestion would be have it dried one. But if you say no, I want to have the wet one, okay, ideally not allowed, but you can have it. आप प्रायश्चित कर लो कि भाई मुझे बॉडी के लिए जरूरत थी तो मैंने लिया और मैंने प्रायश्चित कर लिया. Thank you. Yes. विपिन भाई, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, तो आत्मा और मन के संबंध के बारे में आप जरा समझाएंगे, क्योंकि मन ही सारे विचारों का केंद्र है और मन से ही अच्छे विचार और बुरे विचार किए जाते हैं, और बुरे विचारों से शरीर में कई तरह की बीमारियां भी जन्म ले लेती है. बहुत सिंपल है अनिला जी, यस बेन को समझाइए कि जो मन के विचार है वो विचार कभी आते हैं, जब भी आत्मा है तो आती है ना. आत्मा ही नहीं है तो मन में विचार कहाँ से आएंगे? तो आत्मा तो जो मन, एज फार एज जैनिज्म इज कंसर्न, मन इज लाइक एन अनदर ऑर्गन, इट्स अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन. 5 इंद्रिय और छठू मन, एम ज આપણે હંમેશા સાથે બોલીએ છીએ. तो मन में विचार कभी आते हैं, आत्मा है तो आते हैं. और आत्मा के अंदर जो कषाय है, क्या ये राग और द्वेष है या तो अच्छे शुभ परिणाम है, उसकी इफेक्ट हमारे मन पे होती ही है. तो दोनों अलग चीज नहीं है. मन साधन है और कर्ता जिसका है, यानी कि द कंट्रोलर या तो जो डूअर है वो सोल है. Akash Bhai is asking, આત્મા અને શરીર અલગ છે, પણ શરીર વગર આત્માનું મહત્વ કે સ્થાન શું? જો આત્મા અને શરીર અલગ છે, કારણ કે જ્યારે આપણે મરી જઈએ ત્યારે શું જાય છે? કંઈક તો જાય છે ને, એને આપણે આત્મા કહ્યો. So with experience you can only say that there is something, consciousness is there when you are alive. When you are dead, your consciousness is not there. A consciousness को हम रूह कहे, आत्मा कहे, spirit कहे, whatever word we want to use it can be used. So they are definitely different. Now, as long as atma is there in the body, it has a body has a value. As long as it is not there, it has no value. As long as they are together, we have to respect the body. As long as they are together. Understood. लेकिन सिद्ध परमात्मा को तो वहां बॉडी है ही नहीं ना. हम तो ये इसमें मानते हैं, जो सिद्ध परमात्मा की बात मानते हैं, तो वहां बॉडी का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है ना. Right. यस अनिला बेन. विपिन भाई, सचित और अचित का विवेक, बोलते हैं कि हमें सचित का त्याग और अचित का भोग करना चाहिए, और वर्तमान सिनेरियो को देखते हुए हर चीज के बारे में बोलते हैं कि कच्ची सब्जियों को नहीं उबाल के खाना चाहिए. तो इसके बारे में आप जैन दृष्टिकोण से बताएंगे? देखिए, हम लोग थोड़े कंफ्यूजन में है. कंफ्यूजन क्या है? हमने एक इंद्रिय जीव को बहुत पकड़ के रखा. पानी सचेत, पानी अचेत, लीलोत्री, ये सब चीज के ऊपर हम इतना ध्यान रखते हैं कि कभी कभी भूल जाते हैं. ये चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा राग और द्वेष है. हम राग और द्वेष से निपटते नहीं है, और एक इंद्रिय जीवों की पूरी हमारी दिनचर्या में एक इंद्रिय जीव और एक इंद्रिय जीव की चर्चा करते रहते हैं. देखिए, मैं फिर से कहता हूँ, एक इंद्रिय में 2 प्रकार के जीव है, सूक्ष्म जीव और बादर जीव. और हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि सूक्ष्म जीव को हम कभी न मार सकते हैं, न मरते हैं. दूसरा, हमारे शास्त्रों में ये भी लिखा गया है, परस्परो ग्रहो जीवानम, यानी कि यू कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट हैविंग अ वायलेंस टू द लोअर काइंड ऑफ जीवाज. तो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए हमें हवा तो चाहिए ही, पानी तो चाहिए. अभी हवा में आप कहाँ सचेत अचेत करेंगे? पानी में सचेत अचेत कर सकते. ठीक है. तो जैन धर्म में एक चीज बहुत स्पष्ट कहता है कि एज फार एज पॉसिबल ट्राई टू अवॉइड द वायलेंस. एज फार एज पॉसिबल. इट इज नॉट पॉसिबल ऑल द टाइम. हमारा जीवन ही नहीं बचेगा अगर हम सोचेंगे कि हमको कोई प्रकार की वायलेंस नहीं करनी है. आप श्वास लेते हैं ना, तो उसमें हवा के जो जीव होते हैं ना, उसकी वायलेंस तो हर समय पे आप करते हैं. बट योर भाव शुड नॉट बी देयर. आपका भाव ऐसा होना चाहिए कि मैं कम से कम वायलेंस करूं. बस यही दृष्टि से हमें चलना है.
Vipin Bhai, Rishit Kothari is asking, so Rag and Dvesh, how should one get out of Rag and Dvesh? Is it by meditation? Nothing by meditation. It's a practice that you have to do. હવે જે ભાઈએ પૂછ્યું છે ને, the one who has asked this, ask him to write down 4 words, 4 simple words. One is anger. Anger. The other one is called ego. The third one is called deceit or cheating. And the fourth one is called greed. Write down these 4 words in your life. आपके घर में दीवान के ऊपर या तो किचन के अंदर, लेडी है तो किचन के अंदर, बेडरूम के अंदर, ये 4 शब्द लिखो. ये 4 शब्द लिखने के बाद हर टाइम उस पे नजर करो. Am I doing something which is anger? Am I doing something where I'm, my ego is not satisfied. Nobody called me. Nobody gave me the importance. I did so many things for so many people. एक ego हो जाता है. So ego should not be there. Third thing, you should not cheat anybody. And fourth thing, you should not have a greed. ये 4 अगर निकल गया तो राग और द्वेष अपने आप निकल जाते हैं. राग और द्वेष are not something different from that this 4 kashais actually. और उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. देखिए, लोभ हो ना, लोभ यानी greed. When you satisfy your greed, you develop ego. When you don't satisfy your greed, you get anger. And to maintain your status, you do all sorts of cheating, maya, जिसको माया कहते हैं, to try to maintain your whatever social and economical and other things. तो ये 4 कसाई को ध्यान में रखो. और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, हम ये 4 कसाई से छूट नहीं सकते. देखिए, मैं तो बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ, हम छूट नहीं सकते, लेकिन एक तो कोशिश करें ना कि जितना हो सके उतना तो कम करो यार. अब मैं नहीं साहब, ये तो आ तो क्या थी था, ये तो हो नहीं सकता है. तो मैं कहता हूँ हो नहीं सकता है, लेकिन एक बार सोचो, एंगर को कम कर सकते हैं, ग्रीड को कम तो कर सकते हैं ना आप. ट्राई टू लर्न दैट इज जैनिज्म. Right. या विपिन भाई, क्या ये सही है कि क्रोध करने से लीवर, दुखी होने से लंग्स, चिंता करने से पेट और पाचन, तनाव करने से हार्ट और ब्रेन, और डरने से किडनी कमजोर होती है? छोड़िए ना, ये सब हमारे ऑर्गन्स की क्यों बात कर रही है. ये चारों चीज से हमारी आत्मा को कितना नुकसान होता है पहले वो सोच लीजिए. ठीक है, somebody has given very nice thing. I have no idea that one particular, but I can tell you, anger, all 4 can damage your brain. That is 100%. बाद में organ के ऊपर क्या असर होती है तो मालूम नहीं है, but anger can definitely affect your brain, and that can affect your heart and things like that. एक वेदना अपवर्तनीय आयुष्य है. वेदना अपवर्तनीय आयुष्य, उसका मतलब क्या है? वेदना का मतलब एक है क्रोध. आपको इतनी वेदना हुई, इतना क्रोध हुआ कि आप मर जाएंगे, आपका आयुष्य ही खत्म हो जाएगा. दिस इज व्हाट हैज बीन रिटन इन आवर शास्त्र. विपिन भाई, सॉरी, आपने जे वेदना की थी, आई एम इंटरप्रेटिंग, आई थॉट इट विल बी इम्पोर्टेंट. Bombay Hospital, I will just like to get for the viewers notice, in 1992 there is a study done in Bombay Hospital wherein they studied that when the animals are killed in the slaughterhouses, they release that hormones of that anger and fear, which releases in the form of nitrous oxide in the blood, is the gas which releases that chemical is released because of the fear of getting killed. And that nitrous oxide is in the blood, which remains in the blood, in the flesh, even though how much ever you wash it or eat it. And when you digest that nitrous oxide, it destroys your organs when you have their flesh. So there's a study which was actually done in Bombay Hospital in 1992. I thought I'll just yeah, I think it was done by Dr. N.K. Shah, if I don't forget about it. Very senior physician. And once I went to him and he had mentioned about this study actually. Yes. So that correlates to your Vedna. Sorry. Yeah, absolutely. Interpret Anil again in that. Bipin bhai, coming to your discussion on the mantra Vignan and mantra jap, there are a few questions. Rohan Mehta is asking, can listening and not chanting help? Example for Bhaktamar. Dilip Mehta is asking, does diya or ringing bell also have any place in Jainism for one's mindset? And Jinesh Seth is asking, so mantra has to be recited loudly to get the phonetic effect?
Very good. See, first of all, if somebody recites it, and you get that energy, it can help you. So it's not necessary that you only do it. One, if you do it, better. But if you cannot, suppose आपको भक्तांबर आती ही नहीं है तो आप क्या करें? So it's fine to listen to it, and it will definitely have the effect. The second question somebody asked is about the music, light or diya. You see, yes, any music. Again, एक चीज आपको याद रखनी है कि your faith should be that, and it should be something which is soothing. If you listen to a soothing music, or if you have faith in one particular thing, that's what you are listening. I'll tell you a very simple example. Osho, you must have heard about Osho, right? The people who believed in Osho, they were getting mesmerized by his voice, just by his voice. There were two things. His voice was so good, his phonetic energy was so good, and second thing, the person had a faith in him. So all phonetic energy depends on two parts: the kind of the voice which is generated and the faith which you have. या विपिन भाई, जैसे ये जो महामारी कोरोना फैली हुई, ये तिर्यज की बजाय इसने मनुष्यों को ज्यादा प्रभावित किया है, जबकि कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से हम देखते हैं कि पशु पक्षी तिर्यज आदि अभी फिर भी सुरक्षित है. इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? Very difficult question to देखिए इतने भी, see, basically there's so many diseases which are occurring in the Tiryans, but we do not notice them. You know, some जो एनिमल के एक्सपर्ट्स है उससे हमें ज्यादा पूछना चाहिए कि भाई which are the diseases which affect. We are usually concerned about the diseases which affect human being and which destroys human beings. So fine, the question is very good. It needs little research that why coronavirus. But you know, as everybody knows, like anthrax kills the man but doesn't kill the cow. So there are a number of viruses which are very particularly damaging our DNA or our immunity system. That's the nature of the virus actually. Similarly, there may be many viruses which may be affecting the Tiryans but not affecting the human being. Vipin bhai, I seem to have more on the mantra and the chanting. Obviously. Nikita Kothari is asking, why are there certain timings to recite Bhaktamar and Puchi Sonam? See, basically, why we should do it in the morning? Because the whole, wherever you are, whether you are in USA or whether you are in Bangkok or Hong Kong or India, the morning is considered to be a time when there is least pollution as far as the whole atmosphere is concerned. So to enhance your the effect of that phonetic energy, it should be recited in a place which is quiet, which is least polluted. You should sit in one particular position where there are minimum disturbances, so that you can focus on this, and there is a maximum the phonetic energy which can act on your brain. Suppose આજુબાજુમાં બહુ જ અવાજ હોય, so that phonetic energy will be disturbed. Correct. So that's why we do it in the morning, early morning again. And Kamlesh Sheth is asking, reciting 45th text of Bhaktamar cures your serious disease? I don't agree with this. Bhaktambar was never created to cure any diseases. So there are some theories going on. I don't want to mention the name of the person. I went and attended her seminar once, and I was called as a chief guest. And half of the way I had to leave the auditorium saying that I don't believe ऐसे चमत्कार कभी भगवान ने बताए नहीं है, मानतुंगाचार्य ने खुद ने भी नहीं बताया है, और using such mantras for bailing the people. Suppose somebody asked that I have got tension, what should I do? So she said 13 नंबर की गाथा पढ़ लो. वो जो एक जो बाबा आते थे ना, वो बाबा जैसा, for something she would say ये गाथा पढ़ लो, ये गाथा पढ़ लो. I don't think this is right. I'll tell you one very bad incident in my life. My real sister's jet, and his brother-in-law, he was on medicine. He was a ischemic heart disease patient. He was diabetic and hypertensive. His age was only 52. And somebody told me that recite this particular type of mantras and you will be cured of all the diseases. He stopped the medicine, and on the 9th day we lost him. Who will be responsible? So any mantra can have a supportive effect or a soothing effect,
but not the curative effect. We should not, play with anybody's life. या विपिन भाई, आप मौन साधना के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि मौन देखिए का देखिए हमारे में जो संवर की बात आती है उसमें 3 गुप्ती की बात आती है, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काया गुप्ती। उसका मतलब क्या होता है? वचन गुप्ती इज कॉल्ड मौन बेसिकली, हमारे जैन दर्शन की दृष्टि से देखा। भगवान ने क्या कहा कि योग का उपयोग यानी कि मन वचन काया का उपयोग जितना कम हो उतना अच्छा है, बिकॉज दैट्स द कॉज ऑफ योर आश्रम। आपके कर्म वहां से ही आते हैं। देखिए कर्म आते कहाँ से और जाते कहाँ से? तो कि मन वचन काया से ही जाते हैं या तो आते हैं। तो उसने कहा कि मन गुप्ती यानी कि कम से कम बोलो, वचन गुप्ती। अगर शब्द की जरूरत नहीं है तो क्यों बोलते हैं? देखिए मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। भगवान महावीर ने जब तक प्रश्न नहीं पूछा गया, भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया है। जब तक गीता के अंदर अर्जुन पूछता नहीं है तो कृष्ण जवाब नहीं देता है। गीता में तो आपने पढ़ा होगा ना, अर्जुन पूछ रहा है, कृष्ण उवाच भन्ते। तो भन्ते का जब हमारे शास्त्र में आया है, यानी कि यू आर नॉट सपोज टू स्पीक unless and until it is not necessary. That is one thing. Or it has got a tremendous power within you which goes up actually. तो ये पावर की बात है। सेकंड थिंग, भगवान ने बहुत अच्छी बात कही कि गुप्ती करना चाहिए। अगर गुप्ती नहीं करता है, वचन गुप्ती, और बाद में क्या गए भाषा समिति। अगर वचन गुप्ती तू नहीं कर सकता है तो भाषा की समिति कर दे, यानी कि भाषा की मर्यादा। तो भगवान ने ये दोनों शब्द हमें संवर के अंदर समझाया है, वचन गुप्ती द्वारा और भाषा समिति के द्वारा आपके कर्म को आने को आप रोक सकते हैं। उसको संवर कहा जाता है। Vipin bhai, Dhirav Shah is asking, how important is it to have dietary restrictions for spiritual upliftment? Example, abhaksha, kanmul, etc. Also karmic binding because of such consumption. बेसिकली यहाँ एक चीज और समझनी है, क्योंकि आज की जनरेशन आप ये अनंता जीव की बात करेंगी तो नहीं समझेगी। इसके लिए एक बहुत बहुत बढ़िया शब्द है, that the food is divided into 3 major categories, सात्विक, तामसिक and राजसिक। 3 शब्द है। सात्विक food, one which is a balanced diet, like you don't have a lot of things which are now what is तामसिक? तामसिक आप खाना खाते हैं ना तो it excites you। आपका जो माइंड और बॉडी है ना, माइंड बॉडी एंड it cause an excitation in your body. The third thing is called rajasic. The rajasic is one which makes you lazy. Sattvic, tamasic and rajasic. Now if you are lazy and if you are irritated, which you do, हमारे जो कंदमूल है ना, कंदमूल में जो हमारे गाजर है, पोटैटोज है, सूरण है, वो they are rajasic food. Kanda or what we call onion, garlic, these are called tamasic food. If you eat tamasic food and rajasic food, you cannot control the activities of your body or your mind, and then spiritual practice becomes very difficult for you. And that's why you should not overeat also. So not only that you don't eat certain things, but you should not overeat also. Non-veg की तो बात ही छोड़िए, because there are ample number of proofs to say that how it can damage your body and mind both. तो उसकी तो हम बात ही नहीं करते। लेकिन अब एक लीलोत्री की बात आती है, देखो बच्चे ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि साहब ये हम पाखी करते हैं, तिथि करते हैं, उसमें हमको लीलोत्री नहीं खाना है। what is the science of this actually? Let me tell you, देखिए हम भगवान ने बहुत बहुत स्पष्ट बात की। 2 दिन आपको छूट दी, तीसरे दिन कहा कि आप लीलोत्री मत खाइए। ये लीलोत्री खाने की सिर्फ बात नहीं है। 2 दिन आपको छूट दी, भगवान ने कहा तीसरे दिन आपको संयम रखने का है। लेकिन हमने क्या गड़बड़ कर दी, लीलोत्री नहीं खाना, कठोल जाए उतना खा लीजिए। ये बात सच नहीं है। 2 दिन आपने अच्छी तरह खाना खाया, 2 दिन आपने संयम नहीं रखा है, तीसरे दिन आपको संयम रखने का है। तिथि इज नॉट ओनली फॉर नॉट टू ईट लीलोत्री, तिथि इज टू ऑब्जर्व ऑल काइंड्स ऑफ रिस्ट्रेंट, डाइट के रिस्ट्रेंट्स, अपनी सेंसुअल प्लेजर्स के रिस्ट्रेंट,
So all five senses has to be restrained on Tithi days. अनिला जी जल्दी प्रश्न पूछिए। हाँ जी। शरीर तो नाशवान है, फिर उसकी सुरक्षा क्यों करें, उसके लिए क्यों इतना ध्यान रखें? मालूम है शरीर तो एक दिन खत्म हो जाने वाला है, फिर भी हम शरीर की सुरक्षा के लिए, शरीर की रक्षा के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रयास करते रहते हैं। देखिए फिर से मैंने ये की बात कह रहा हूँ, शरीर साधन तो है ना। अगर आपको एक किनारे से दूसरे किनारे जाना है तो साधन की तो जरूरत पड़ती है ना। आप दूसरे किनारे पहुंच जाएंगे, बाद में छोड़ दीजिए, लेकिन उसके पहले छोड़ेंगे तो आप डूब जाएंगे। उसके पहले तो आप नहीं छोड़ सकते हैं ना। आपको एक नदी पार करनी है ना, तो नदी पार करने के लिए साधन तो चाहिए ना। तो साधन तब तक तो रखिए जब तक नदी पार नहीं करते हैं, बाद में छोड़ दीजिए, अपने आप छूट जाएगा। So Bipin bhai, I've run out of questions, but I have a question of my own. You know how we say that in Jainism says that it's inevitable, suffering is inevitable in this human form or in a bodied form. Disease is inevitable, death is inevitable, old age is inevitable, pain is inevitable. Then what should be our outlook when we know that all of this is definitely going to happen? Should we fight it? Should we try to cure it? Should we try to do what? પ્રીતિબેન તમને 5 સમવાય તો મેં કેટલી વાર ભણાવું તમને? Nothing. It's as clear as that actually, that हम छदमस्त जीव है, हम कर्म के साथ आज जुड़े हुए हैं। कर्म है तो दुख होने वाला ही है। जब भी दुख आता है तो हमें पुरुषार्थ करना है, काल को भी जीतना है, स्वभाव को भी जीतना है, और हमें ऐसी अवस्था में जाना है जहाँ कम से कम दुख हो। बस यही रखो। आप मोक्ष की बात तो करेंगे, लेकिन कम से कम दुख की तो बात करो ना। I'll tell you very simple. जैसे किसी को भी कुछ suppose you got some injury, somebody has got an injury. There are two people who has got the injury. How one reacts and how the other reacts. Very simple. एक में समता भाव है, दूसरे में समता भाव नहीं है। वो छोटी सी चीज एक को इतना दुख देती है और एक बोलता है ठीक है, अरे यार हो गया, क्या क्या फर्क पड़ता है। That is the life. आप कोई इनएविटेबल तो है ही नहीं, लेकिन अगर जो इनएविटेबल है उसका सॉल्यूशन तो हमारे पास है ना। और मैं तो ये कहता हूँ, भगवान महावीर ने हमें वर्तमान में जीना सिखाया। हम क्यों चिंता करें भविष्य की? आज अच्छी तरह जी लो ना, परोपकार कर लो, संयम से जी लो, अहिंसक जीवन शैली अपना लो। बहुत ज्यादा जैसे मैंने 4 कषाय है उसको कम से कम करने की कोशिश करो, बात खत्म हो गई। यू रिमेन हैप्पी। और मैं तो एक बहुत बड़ी फिलोसॉफी कहता हूँ, तो तीर्थंकर महावीर की फिलोसॉफी नहीं है, मेरी फिलोसॉफी है। मैं कहता हूँ कि व्हाट इज लाइफ? व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज अ टाइम गिवन टू यू। मुझे 70 बरस मिला है, 80 बरस मिला है, आपको 100 मिलेगा, जो भी टाइम देगा। लाइफ इज अ टाइम गिवन टू यू, इट्स अप टू यू हाउ यू पास इट, हाउ यू एंजॉय इट। बस बात खत्म हो। So in short, what I understand is that if there is physical pain or if there is a physical disease or physical any kind of ailment, then what you're suggesting is that first try, of course, to get medical help. There is nothing Absolutely. wrong with getting medical help because this body is important while we have it. But if that pain is still left behind, then you have samta bhav, you have equanimity, and accept that that pain is part of this bodied existence, and then try and have a more positive outlook and do as much good as you can with the time we have. Pritiben, I'll correct you here. Okay. It's not that samta bhav comes after the medical treatment. Both should go together. मेडिकल ट्रीटमेंट भी चालू करिए और समता भाव भी साथ में ही चालू रखिए आपका। परफेक्ट। वन बाय वन, नॉट वन बाय वन। परफेक्ट। बिपिन भाई, मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा जो मेरी निजी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। मेरी बेटी है 27 साल की, सबसे बड़ी बेटी। शी इज हैविंग सेरिब्रल पॉल्सी सिंस बर्थ के समय उसको फोर्सेप्स डिलीवरी से किया गया और उस टाइम उसको ब्रेन इंजरी हुई, 70 to 80% ब्रेन डैमेज हुआ। कुछ सालों पहले वो काफी मतलब कॉफ एंड कोल्ड की वजह से और अपर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की वजह से उसको वेंटिलेटर पे रखा गया।
And तभी डॉक्टर और मेरे के लिए आफ्टर 5 days शी केम आउट. उसने बहुत स्ट्रगल करके शी वॉज बैक टू लाइफ. काफी डॉक्टर्स ने मुझे उस समय पूछा कि आपने इससे बचाया क्यों, क्योंकि वो चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती, बोल नहीं सकती, अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकती. शी इज टोटली बेड रिडन. वो क्या देखती है मतलब वो भी हमें नहीं मालूम. तो डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि जब आप उसे कोई सोशल लाइफ नहीं दे सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आपने उसे क्यों बचाया. एंड शी वॉज नियर टू डेथ. खाली मतलब मैंने उसे देखा था कि अगर उसे वेंटिलेटर पे नहीं रखा जाता तो शायद हमारे बीच में आज वो नहीं होती. लेकिन जैसे बचपन से हमें तो एक ही घुट्टी पिलाई हुई है कि जब हम चींटी भी अगर पानी में मरते हुए देखते हैं तो उसे बचाने की कोशिश करते हैं. तो ये तो मेरी बच्ची थी, तो मैंने हर संभव प्रयास किया. पर डॉक्टर बोलते हैं कि आप इसे कोई सोशल लाइफ नहीं दे सकते, उसको हर पल इतना लाइफ में पेन है, तो आपने उसे बचाया क्यों. She is a purpose of your life. She is a purpose of your spirituality. She is a निमित्त for what you are today, अनिला जी. तो मैं ये मानता हूँ कि ये पर्पस रहने वाला था, ये निमित्त रहने वाला था. स्पिरिचुअलिटी आपके लाइफ की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है. देखिए आप, मैं तो एक माँ को प्रणाम करता हूँ जो इसको समझने की कोशिश करते हैं. तो शी इज अ निमित्त. बेसिकली उसका तो अपवर्तनीय आयुष्य था ही नहीं. तो वो तो आपकी एक निमित्त बन गई. चाहे जो भी आपका डॉक्टर्स चाहे जो भी कहे, डॉक्टर्स कभी आपको प्रैक्टिकल होने की भी बात करते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि there is no need to be so practical. If you understand the life, if you understand the value of life, if you understand the concept of non-violence, क्योंकि आप उसको अनुमोदना भी नहीं दे सकते, तो आपने वो काम किया है. You are true Jain, and she is a निमित्त for whatever you are today as on. जी, बहुत सहनशीलता, बहुत समता उसकी वजह से मैंने मेरी जिंदगी में सीखी है. उसको बहुत वेदना में कई बार देखा है, हर पल तो उसको. तो आपने कितने कर्म बंध नहीं किए उसके कारण. you should be you know, I mean, you should thank her, actually her life, that you are what you are today. मेरे लिए तो वो एक मूक प्रेरणा है जो मुझे हर पल प्रेरणा देती है. जी, बहुत बहुत आभार. So Bipin bhai, it was an excellent end to the session. और जैसे मतलब हम अगर टेक अवे करेंगे तो 3 बातें स्पष्ट निकलती है ये सेशन में से कि सबसे पहले तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो आस्तिक भाव में रखिए, दैट आत्मा इज द स्टार्ट एंड फिजिकल इज जस्ट अ मैनिफेस्टेशन. ये इस बात को हम घर कर ले और अपने दिमाग में बैठा लें, और इसके आगे जो भी चलता है वो हमारा साइंस है जो हमने ये लेक्चर के थ्रू समझने की कोशिश की. दूसरी बात है, अगर हम जैन दर्शन को एक साइंस की तरह लेते तो हमारा एक लाइफस्टाइल अच्छा बन जाता है, साइंस ऑफ लाइफ बन जाती है. और धार्मिक दृष्टि से क्रियाकांड में अगर हम ना पढ़ के उसको एक लाइफस्टाइल बना ले तो हम खुशी से जी सकते हैं. एंड यस, दैट इज पॉसिबल कि वी कैन बी हैप्पी बाय हैविंग अ सिंपल लाइफस्टाइल with the Jain principles in our hand. And third thing which I basically personally took from this session as a doctor also, there is a point of time where you should not think too much, keep life simple. This is what I have taken. In concluding remark, I'll just tell you one thing. मुझे एक व्यक्ति ने पूछा कि हम इतने मंदिर क्यों बना रहे हैं, ये मंदिर बनाना तो there's some movement going on against मंदिर. मैं उसको एक ही चीज का, मैं उसको एक सिंपल एग्जांपल दिया कि आप मुलुंड के देरासर में एक जीव दया की पेटी रखिए और यही पेटी आप ताजमहल होटल में रखिए, क्या डिफरेंस है आप देख ले. बस सिंपल है. भाव प्रकट करने के लिए मूर्ति की जरूरत या तो भगवान की जरूरत है, ये चीज. और दूसरी चीज मैं ये कहता हूँ, हमारा धर्म स्व के लिए होना चाहिए, पर के लिए भी होना चाहिए. आप जीव दया करो, अनुकंपा करो, पशु पशु के लिए चबूतरा करो, पानी की परब लगाओ, पांजरा पुल बनाओ, बस यही भावना से हम चले तो हम सच्चे जैन हैं. आप सबको We wish everyone a healthy life ahead after this session. Thank you Bipin bhai, thank you very much. थैंक यू everybody. सबको जय जिनेंद्र. बहुत बहुत आभार.